Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss an important topic, that is lysosomes. So let's move to the whiteboard. So lysosomes. Which are also called as suicidal bags. So dear students, first of all, the discovery. So they were discovered by Christian Rene D. Dove in 1949. The lysosomes are morphologically distinct from other organelles. So this is the line which is written in the first sentence. So lysosomes in morphologically दूसरे ऑर्गेनल से किस तरह से डिफरेंट है? मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप और स्ट्रक्चर की बात की जाए, इससे पहले हम राइबोसोम्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से गोल्जी ऑपरेटस को डिस्कस कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ये नेटवर्क्स हैं, दे फॉर्म नेटवर्क्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकली उससे डिस्टिंक्ट कुछ इस तरह से है कि ये सिंपल एक सादा सा एक वेजिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेजिकल, और उसके अंदर जस्ट एंजाइम्स हैं। इट हैज़ नथिंग मोर कॉम्प्लेक्स, क्लियर, जस्ट एंजाइम्स, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. So it is composed of two words. Lyso, that means splitting, and soma means body. Yeah? So it means that is the body which is responsible for splitting, for the breakdown. Clear? तो जहाँ पर भी स्प्लिटिंग या फैगोसाइटोसिस का वर्ड आएगा वहाँ पर हम लाइसोसोम्स की बात करेंगे, जैसे कि ये की वर्ड्स में साथ साथ आपको बताता जा रहा था, लाइक द गोल्जी ऑपरेटस, इट इज़ मोर प्रिसाइसली इट इज़ रिलेटेड टू द सेल सेक्रेशंस. So whenever there is the word of phagocytosis, so the organelle will be the lysosome. So it is a combination of two words, lyso meaning splitting and soma means the body. Now dear students, this is the lysosomes are cytoplasmic organelles which are bounded by single membrane and contain acid phosphatases and
other hydrolytic enzymes. There are about 40 different hydrolytic enzymes which are present in lysosomes. Here. And these hydrolytic enzymes include nucleases and phosphatases and lipases and proteases and carbohydrases, etc., etc. So, like this, it contains about 40 different hydrolytic enzymes. Or dear students, what are hydrolytic enzymes? They are responsible for hydrolysis. Hydrolysis आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल के साथ समझाया था वहाँ पे आपको. That is, it is the breakdown of macromolecules. तो ये MCQ के लिए भी याद रखना है. It is the breakdown of macromolecules, means the large molecular weight molecules in the presence of water is called hydrolysis. So that is why these enzymes, they are also called as hydrolases. So these are also called as these hydrolytic enzymes are called hydrolases. Okay? तो ये दो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स कैटेगरीज हैं जो कि हमारे इस टॉपिक के अंदर बुक में शामिल की गई. ये थोड़े से उनके आगे एक्सप्लेनेशन है इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्सेप्ट्स. तो एक तो इसमें एसिड फॉस्फेटेसिस की बात हुई. जहाँ तक एसिड फॉस्फेटेसिस की बात है उसको भी क्लियर करता चलता हूँ. द एसिड फॉस्फेटेसिस basically the enzymes which hydrolyze the organic phosphates within acidic pH. For example, the hydrolysis of ATP or AMP or ADP or DNA और RNA. तो इन के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स. तो फॉस्फेट्स हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक. तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हैं वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कहलाएंगे. उनकी हाइड्रोलाइसिस के लिए इनको हाइड्रोलाइज करते हैं द एसिड फॉस्फेटेसिस, जो कि इसका मेजर कंपोनेंट है इन ऑर्गेनल्स का. क्लियर?
So it is rich in strong digestive enzymes. Clear? Now there are some conceptual terminologies related to the lysosomes. तो उससे पहले एक डायग्राम है, उससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. So over here, so let's suppose this is our cell, and this is the cell membrane, means the plasma membrane, and here it is, and here is present so that is basically endoplasmic reticulum here, and this is basically rough endoplasmic reticulum, and you can see the ribosomes attached to it here, and from here these are the cisternae of the Golgi vesicles, Golgi apparatus. Here, and from here is budded Golgi vesicle. So from here, this is the transport vesicle. From endoplasmic reticulum, it's moving and it gets fused with the forming phase of the Golgi apparatus. So these are the cisternae. Of Golgi apparatus, and this is the rough endoplasmic reticulum here, and from here the enzymes, the hydrolytic enzymes, they are moving and moving into the cisternae, which are interconnected, and ultimately these are the enzymes. तो यहाँ पर देख सकते हैं, this is the budded of, that is basically the primary lysosome, and here it is also the budded of the primary lysosome, but this contains the hydrolytic enzyme, the lysosomal enzymes. Clear? ये है तो Golgi vesicle, that is the Golgi vesicle, but it contains the hydrolytic enzymes, so this is called as the primary lysosome. And here is the food which is coming inside, and now it is getting entry into the cell. So the cell is making a membrane, a boundary over here, and it forms the food vacuole. So as soon as any foreign particle which gets entry into the cell, the primary lysosomes approaches them. So they will approach them and fuse with them, the primary lysosome. So it's moving, and over here and over here, they get attached to this food vacuole. So this is the food vacuole containing the food, and this is the primary lysosome, which is
getting attached to this food vacuole. Now it becomes fused with this food vacuole, and ultimately it is digested. Clear? So this is the food vacuole, which is containing the food particle as well as the lysosomal enzymes, and after that is digested into the food is phagocytosed. So this is how it occurs, as you can see. So now these blue small pieces are the pieces of digested food, and over here there's one more thing. This primary lysosome, it may also eat the worn out or damaged parts of its cell. Like, let's suppose this is a mitochondria which has been damaged. Clear? So this primary lysosome will start digesting, and ultimately it will convert into digested like food material, and the parts could be reused or recycled. So this is digested mitochondria. Clear? Now I'm going to label it. So this is food, and this is our plasma membrane. And this is now the food vacuole. Clear? And this is now the primary lysosome getting attached to this food vacuole, and it becomes, now this is the secondary lysosome. And this one, the primary lysosome, which eats, this is worn out mitochondria, and digests is, so this is the autophagosome. Autophagosome. Here. So dear students, here are two important things. ये सारा आपको process समझ आ गया. So any foreign material that gets entry into the cell, the lysosomes approach them and phagocytose them. Clear? And so that is the reason the lysosomes, they are found in most of the eukaryotic cells, except the plant cells. Clear? Except the plant cells. जो डिफ्रेंशिएशन वाली डायग्राम है शुरू में एनिमल और प्लांट सेल में जो दी गई है, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर लाइसोसोम के साथ वो मेंशन्ड है. They are absent in the plant cells. So except plant cells, they are present almost all the eukaryotic cells. And among eukaryotic cells,
they are present in those cells which exhibit phagocytic activity. For example, the neutrophils, which are directly involved in the phagocytosis of small particles, and the monocytes, which are involved in the phagocytosis of large particles. The monocytes, they coalesce with each other to form the macrophages, and the macrophage engulf and form the and digest the phagocytose the large particles. Clear? तो लाइजोसोम्स ऐसे सेल्स में ज़्यादातर मौजूद होंगे जिनके जो रिलेटेड टू द फैगोसिटिक एक्टिविटी, जहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगी. और व्हाट इज फैगोसाइटोसिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज द एनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स. यहाँ पे देखिए फूड है सॉलिड पार्टिकल, जैसे ये अंदर आएगा सो दैट इज द फैगोसाइटोसिस विच इज द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस. क्लियर? So these are the white blood cells. Neutrophils and monocytes, these are the white blood cells or the leukocytes. Clear? And the enzymes are processed and formed in rough endoplasmic reticulum, from where they are transported or they are processed in Golgi apparatus and the Golgi vesicle that contains these lysosomal enzymes is called primary lysosome. So it is very much important regarding short question as well. तो यहाँ पर देखें मैसेंजर आना कहाँ से आएगा? फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियर पोर्ट्स में से होता हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मौजूद हैं राइबोसोम्स. यहाँ पर उनकी सिंथेसिस होगी, यानी कि एंजाइम्स की, इन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी. वहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल में पैक होकर और पहुँचेंगे कहाँ पर? टू द फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस. उनमें से फिर ये इनकी मज़ीद जो है वो पैकिंग होगी और इनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा. अल्टीमेटली जो मैच्योरेशन फेस है, जो मैच्योरिंग फेस है, वहाँ से ये बर्ड ऑफ होंगे एज द गोल्जी वेसिकल. So this is Golgi vesicle, but containing lysosomal enzymes. So that's why Golgi vesicle is called primary lysosome. Clear? और उसके बाद ये जैसे ही फूड एंटर हुआ, जैसे एंट्री की, फूड हो सकता है, कोई जर्म्स हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, एनीथिंग. जैसे ही ये सॉलिड पार्टिकल्स एंटर होंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, द प्राइमरी लाइसोसोम्स दे अप्रोच देम एंड बिकम अटैच्ड टू देम एंड बिकम फ्यूज्ड. जैसे ही ये फ्यूज हो जाएंगे, नाउ दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज phagolysosome. Clear? Secondary lysosomes or they are also called as phagolysosomes. Clear? इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ये भी वही प्राइमरी लाइसोसोम है और ये इनका एक और रोल है, ये आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे. दैट इज द वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया. और ये किसी काम का नहीं है, ये बल्कि सेल की एनर्जी को वेस्ट कर रहा है. तो क्या किया जाएगा कि इसको डाइजेस्ट करवाया जाएगा फैगोसाइटोसिस के ज़रिए by the lysosomal enzymes, the primary lysosomes,
और ये इसके पार्ट्स को डाइजेस्ट करने के बाद इसको या तो रीन्यू कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, या फिर इसकी पार्ट्स को डाइजेशन के बाद उसको रिसाइकल कर दिया जाएगा ताकि नया कोई और स्ट्रक्चर या नया माइटोकॉन्ड्रिया बन सके। तो इस तरह का प्राइमरी लाइसोसोम जो कि अपने ही वॉर्न आउट पार्ट्स को ईट करे, जो खा जाए, उसे कहते हैं ऑटोफैगोसोम। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफैगोसोम। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइसोसोम्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।